भारत में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और इससे आम जनता खासा प्रभावित है। इस बात को अब केंद्र सरकार ने भी पहचाना है और इस बात की तस्दीक करते हुए कुछ अहम कदम केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए हैं। वित्त मंत्री द्वारा एक अहम घोषणा की गई है जिसके तहत कई चीजों के जीएसटी में कटौती की गई है ताकि जो महंगाई दर बढ़ी है और इससे आम आदमी की जेब पर खासा फर्क पड़ा है और जीएसटी की कटौती करने की वजह से वो जो बोझ जनता की जेब पर पड़ रहा है वो कहीं हद तक कम हो पाएगा। जानकारी आपको बता दें कि जीएसटी के जिन जिन चीजों में कटौती की गई है उसमें सबसे पहले चाय, मिल्क पाउडर, शुगर, एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स, मसाले तथा जूते जिनकी कीमत 500 से कम है उनको पहले वो 6 से 10% तक उनका जीएसटी लगता था, अब वो कम कर उन्हें 5% कर दिया गया है। इसके अलावा सर पर लगाने वाला तेल, टूथपेस्ट, नहाने वाले साबुन, परफ्यूम्स, डिटर्जेंट, इनका जीएसटी अभी तक जो है वो 28% लग रहा था, लेकिन अब इसमें कटौती कर सिर्फ 18% जीएसटी ही लिया जाएगा। इसके अलावा भी जो कुछ चीजें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं जिसमें मिक्सर ग्राइंडर है, रेफ्रिजरेटर है, वैक्यूम क्लीनर है या 27 इंच तक के जो टीवी है तथा वॉशिंग मशीन है उनका पहले तक करीब 31.5% जीएसटी लिया जा रहा था, लेकिन अब उसमें भारी कटौती करते हुए सिर्फ 12% जीएसटी ही लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ बाथरूम और टॉयलेट फिटिंग्स, दरवाजे, खिड़कियां तथा फ्रेम्स जो पहले 28% के टैक्स के साथ बिक रही थी उसमें अब 10% की कटौती होकर केवल 18% जीएसटी जो है वो वसूला जाएगा। इसके अलावा जो मूवी टिकट्स हैं वो भी पहले 35% टैक्स के साथ बिक रही थी, उसमें भी कटौती होगी, वो भी 12% तक ला दिया गया है जिसकी कीमत 100 रुपए तक आंकी गई है। इसके अलावा भी कि कुछ अन्य कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जीएसटी में कटौती केवल इसलिए की गई है क्योंकि सरकार का भी मानना है कि जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है उसका सीधी तौर से जीएसटी जो उनसे वसूला जा रहा है उसमें कटौती कर वो बोझ जो है वो कम किया जाएगा, जिससे आम व्यक्ति जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खाने पीने की आइटम्स हैं या जो रोजमर्रा में इस्तेमाल में करने वाली आइटम्स हैं उसमें टैक्स जो सरकार को दिया जाता था उसमें कटौती होगी, कम होगा तो वो चीजें सस्ती होंगी तो लोगों को अपनी जीवन जो जीने में जो है वो थोड़ी आसानी होगी। तो इस बात से ये तस्दीक जरूर हुई है कि केंद्र सरकार ने भी माना है कि महंगाई दर बढ़ रही है और शायद उसको कम करने के लिए और जनता को राहत देने के लिए जीएसटी में इस तरह की भारी कटौती की गई है जिससे निस्संदेह आम जनता को इसका फायदा जो है वो जरूर हो पाएगा। So I just want to highlight how on many common use items the tax incidence under the GST has been much lower compared to the pre-GST. For example, in items like pasteurized milk, tea, milk powder, sugar, edible vegetable oils, spices and footwear, which are priced up to 500 rupees, whatever relevant unit it may be of measure, attract taxes of 5% under GST compared with earlier tax incidence of 6 to 10%. So naturally, these items which are commonplace items are now taxed less. And again, for example, hair oil, toothpaste, soaps, perfumes, detergents, and on all these items, the average pre-GST tax burden was almost 28%, which was brought down to 18% under the GST. So these are tangible numbers. So if somebody were to comment saying GST actually has brought in burden, and I don't want to repeat the full expression, but it is a fact that it's been called Gabbar Singh tax, which is a shame because this country should know a step like GST has actually brought relief to the common citizens. So the average pre-GST taxation on common use electrical items, for instance, such as mixers, grinders, fridge, refrigerators, vacuum cleaners, and TV. And all of them, the TV, for instance, I'm quoting 27 inches television, and washing machines, they were all at 31.5%, and now they've come down to 12% under GST, and these are no longer luxury items.
These are now essential, and for middle class, where particularly it's a small household where both the spouses are working, these are essential items for better functioning of the household. And if this has been brought down to 12%, we can understand that from an ordinary toothpaste up to these kind of items, prices coming down is actually benefiting the ordinary citizen. Many bathroom and tiles, toilet tile fittings, doors, windows, and frames were earlier taxed at an average of 28%. Now they are all brought down to 18%. So I'm purposely giving. It's not as if the officials here who have actually worked in implementing the system do not know the figures. But we also have a very eminent set of senior journalists seated here. It is they who have to convey through their columns, through their news reports, through their analysis, that GST actually means, in terms of items that are used by common citizens, a relief in terms of the tax, the double tax being avoided, tax on tax being avoided, and actual rates coming down on common man's items. So I'm more for the media who are here, for whose sake I'm repeating these numbers, and those of you who are here, part of the CBIC, the Revenue Service, pardon me for repeating something which you probably know at the fingertips. I don't need to tell you anything more on it. But it is for the media that I'm using this opportunity to say how the GST actually means a common man's relief as a tax, and that is why I'm repeating this. Now, movie tickets. Again, I remember I was in Commerce Ministry, and at that time, at the introduction of GST, there were a lot of confusion prevailing. Movie tickets, at least in some states, because of GST, the rates were coming down, the local authorities imposed their own taxes. But the impression which went around among common people was, because of GST, even movie in a very inexpensive theater is now being charged highly. But that wasn't the case. Movie tickets, which were taxed at almost 35%, were brought down to 12% for tickets up to 100 rupees and to 18% for tickets more than 100 rupees. That was GST. But if locally some states saw a hike in the rates, it wasn't due to GST.